So, hello everyone. At this class, I'm going to discuss again some numericals based on linear programming problems. Already I have discussed two models, that is diet problem and manufacturing problem. So today I'm going to discuss the last type of linear programming problem, that is called transportation problems. Okay. So by the definition of transportation problem, we can say that from transportation problem we can determine the minimum values, right? So let us discuss one example of transportation problem. Okay, this is the last type of linear programming problem. Okay, so the question is, read the question very carefully, because in this question you have to make the shortest path. Along with the shortest path, you have to write the mathematical form of this question, and then only you can solve graphically in order to find the minimum value. Yes, जब मैं इसका डेफिनेशन दिया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, तभी मैं बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए जो है शॉर्टेस्ट पाथ. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन what kind of shortest path you have to draw. Okay, so read the question. Two godowns A and B have grain capacity 150 quintals respectively. There are two godowns whose grain capacity are 150 quintals. ठीक है? They supply, they means who? Godown A and B. They supply to three ration shops D, E and F, whose requirements are 60, 50 and 40 quintals respectively. There are two godowns, their grain capacity are 150 quintals, and these two godowns supplies to three ration shops D, E and F, and their maximum capacity are 60, 50 and 40 quintals. ठीक है? The cost of transportation per quintal from godown to the shops are given below. गोडाउन से शॉप तक लेके जाने के लिए जितना खर्च होता है वो कॉस्ट ये टेबल में दिया गया है. ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर क्विंटल्स इन रुपीस इट इज गिवन. चेक द टेबल. टू फ्रॉम, इसका मतलब क्या है? फ्रॉम गोडाउन ए टू शॉप डी, from godown A to shop E, from godown A to shop F. Similarly, from godown B to D, from godown B to E, from godown B to F. Okay? गोडाउन ए से जब डी में जाता है, शॉप डी में, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर क्विंटल होता है ₹6. ए से ई तक जब जाएगा उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ₹3. A to F जब जाएगा उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है ₹2.5. सिमिलरली इन केस ऑफ गोडाउन B to D, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ₹4 पर क्विंटल. गोडाउन B to शॉप E, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ₹2 पर क्विंटल. गोडाउन B to शॉप F, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर क्विंटल इज ₹3. ओके, हाउ शुड द सप्लाईज बी ट्रांसपोर्टेड in order that the transportation cost is minimum? Our question is, how should the supplies be transported in order that the transportation cost is minimum? मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कब मिनिमम हो सकता है? जब शॉर्टकट रास्ते से जाएगा. अगर लॉन्ग कट रास्ता चूज करना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा होगा ना. तो यहां पे क्या पूछा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड बी मिनिमम. सो फॉर दिस वी नीड टू चूज शॉर्टकट पाथ, राइट? एंड यू हैव टू ड्रॉ दैट शॉर्टकट पाथ ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यू हैव टू ड्रॉ द शॉर्टकट path. And the second question is, what is the minimum cost? Obviously from transportation cost problem always we can determine the minimum values only. ठीक है, ये तो है सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले शॉर्टकट पाथ ड्रॉ करना है. ओके, सो लेट अस चेक द सॉल्यूशन. शॉर्टकट पाथ ड्रॉ करने से पहले first of all you have to consider the variables. Yes or not? Without variables how can we write the mathematical form of this question?
यस और नॉट? सो यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखना है, मतलब जो वेरिएबल्स कंसीडर करना है लाइक एक्स वाई, वो एक्स वाई को कैसे रिप्रेजेंट करना है. वंस अगेन यू रीड द फर्स्ट लाइन. देयर आर टू गोडाउन्स ए एंड बी whose grain capacities are 150 quintals and they supplies to three ration shops D, E and F whose grain capacities are 60, 50 and 40 quintals respectively. मतलब गोडाउन ए से डी ई एफ तीनों में सप्लाई देगा. सिमिलरली गोडाउन बी भी शॉप डी ई एफ में सप्लाई देगा. सो बट वी डोंट नो हाउ मच क्वांटिटी गोडाउन ए विल सप्लाई टू शॉप डी. सिर्फ यहां पे मैक्सिमम कैपेसिटी दिया गया है, जो वैल्यूज दिया गया है यहां पे, these are the maximum capacities 60, 50, 40 quintals, 150. These are the maximum capacities of godowns as well as the ration shops, right? But we don't know how much godown A will supply to shop D, how much godown A will supply to shop E, how much godown A will supply to shop F. So let X quintal grain are transported from godown A to shop D, okay, and Y quintal grain are transported from godown A to shop E. Therefore, देख लो, since it is a two-dimensional figure, so that means after X and Y we cannot consider Z for shop F, yes or not? So for shop F, what you have to write? What is the maximum capacity of godown A? 100, right? ये 100 में से X क्विंटल गोडाउन A को सप्लाई दे दिया, 100 से Y क्विंटल शॉप E को सप्लाई दे दिया, तो 100 में से X और Y चला गया. What is the maximum capacity of godown A? 100, right? तो what about shop F? 100 minus of X plus Y quintal grains are transported from A to F. Yes, it is a two-dimensional figure. It will be two-dimensional figure. So that's why we cannot consider Z for shop F. So for shop F, you have to write 100 minus X plus Y. Why? Because since the maximum capacity of godown A is 100 quintal, so 100 में से अगर X क्विंटल और Y क्विंटल शॉप D और शॉप E में चला जाएगा, तो रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा that will be supplied from godown A to shop F. So that's why you have to write 100 minus of X plus Y. मतलब X plus Y तो चला गया, X और Y चला गया, 100 में से और X और Y चला जाने के बाद जितना रहेगा वही शॉप F में सप्लाई होगा. So 100 minus X plus Y quintal grain are transported from godown A to shop F. Okay. Now you can ask one question. What about then godown B? Why I am not considering any variables for godown B? No need to consider, because if you consider for godown A, automatically you can write for godown B also. Now check what you have to write for godown B. What is the maximum capacity of shop D? 60 क्विंटल. तो गोडाउन A से अगर X क्विंटल शॉप D में सप्लाई दे देगा, तो गोडाउन B से D में कितना सप्लाई देना पड़ेगा? Obviously 60 minus X क्विंटल, since the maximum capacity of shop D is 60 क्विंटल, therefore godown B will supply
60 minus x quintal, 60 minus x quintal grain to shop D. Okay. Similarly, godown B will supply 50 minus y quintals grain. Why 50 minus y quintals grain? Because the maximum capacity of shop E 50 quintal. Since godown A already supplied to shop E y quintal grain, so that's why godown B need to supply 50 minus y quintal grain to shop E. Again, godown B will supply, how much godown B will supply in case of shop F? How much godown A supplied to shop F? 100 minus x plus y, yes or not? Then what is the maximum capacity of shop F? 40 quintals. तो फिर गोडाउन बी को कितना सप्लाई देना पड़ेगा शॉप एफ में? गोडाउन बी विल सप्लाई 40 माइनस 100 माइनस x प्लस y क्विंटल्स, यस और नॉट? ग्रेन टू शॉप एफ. सो दिस इज आवर स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट लिखने में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, बाकी थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है. ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है? सो पहले मैं गोडाउन ए के बारे में लिखा, देन गोडाउन बी. इफ यू नो हाउ मच क्वांटिटी हैव टू सप्लाई फ्रॉम गोडाउन ए टू शॉप डी, गोडाउन ए टू शॉप ई, गोडाउन ए टू शॉप एफ, then automatically you can write for godown B also. Like this you have to write the statement first of all. Okay, next step you have to draw the shortest path. It will take little bit more time in compared to manufacturing and diet problem, because इसमें थोड़ा सा वो shortcut path वो सब भी draw करना चाहिए, ठीक है? Now I will explain the shortcut path. Okay, so after writing the statement, now I will explain the shortcut path. Okay, so how to draw the shortcut path? Once you check, how many godowns are there? There are 2 godowns, right? This is godown A, godown B. How many shops are there? How many ration shops are there? There are 3 ration shops, right? There are 3 ration shops. Shop D, shop E and shop F. There are 3 ration shops. Shop D, shop E and shop F. ठीक है? So गोडाउन A से जब D में सप्लाई देगा, कितना क्विंटल सप्लाई दे रहा है? X क्विंटल. यस. उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखो, मैं क्वेश्चन आधा रब किया, ये पार्ट रब नहीं किया, बिकॉज नाउ यू हैव टू यूज दिस वैल्यूज इन दिस शॉर्टकट पाथ, राइट? आई एम एक्सप्लेनिंग द शॉर्टकट पाथ नाउ. सो गोडाउन ए टू डी एक्स क्विंटल सप्लाई देता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होता है? ₹6 पर क्विंटल, राइट? सो ₹6. सिमिलरली गोडाउन ए टू शॉप ई वाई क्विंटल ग्रेन. A to E जाने में कितना खर्च होता है? ₹3. Then go down A to shop F, that is 100 minus X plus Y क्विंटल ग्रेन सप्लाई देता है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है? ₹2.5. ओके, सो A to D, A to E, A to F complete. Now you have to start from B to D. B to D कितना सप्लाई देता है? B to shop D 60 minus X क्विंटल कितना खर्च होता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ₹4. सिमिलरली B to E 50 minus Y, right? 50 minus Y transportation cost. From the table only you have to write the transportation cost, that is ₹2. Now B to F
कितना क्विंटल है 40 minus 100, that means this will be, you can write it as x plus y minus 60, x plus y minus 60, yeah, x plus y minus 60, and the transportation cost is rupees 3. This is the diagram, okay, this is the shortcut path. Actually shortcut path बोल के कुछ नहीं है, मतलब ये जो फिगर है, from this figure only we can find the mathematical form of the given question, or you can say the mathematical representation of an LPP. So from this diagram only you have to write the objective functions as well as subject to the conditions, right? Okay, so this is the shortcut path. Now from the shortcut path you have to write the objective function. So our objective function is which is always denoted by z. So z is equal to, see how to write the objective function. Go down A से D जब सप्लाई देता है ₹6 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड कितना क्विंटल सप्लाई देता है x क्विंटल. So this will be ₹6 into x, that is 6x, plus 3 into y 3y, plus 2.5 into 100 minus x plus y, okay, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर क्विंटल, इसीलिए तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 6 पर क्विंटल, x क्विंटल. सो 6x plus 3y plus 2.5 into 100 minus x plus y, प्लस खत्म नहीं हुआ अभी तक, प्लस नाउ 4 into 60 minus x plus 2 into 50 minus y plus 3 into x plus y minus 60. This is the objective function, okay, which is not in standard form. सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, objective function is what? It is a linear function in 2 or more variables from where we can determine either maximum or minimum values, right? So you have to simplify this to get the linear function in 2 variables. That means since here we are considering the 2 variables x and y, तो x and y ही रहेगा, okay? So just you need to simplify now. So this will be 2.5x (1.5y) plus 410. So z is equal to 2.5x plus 1.5y plus 410. You can check, it is a linear function in 2 variables only. 2.5x plus 1.5y plus 410. This is our objective function. From here only we can determine the minimum value, right? So सिर्फ objective function से तो काम नहीं चलेगा. You have to find the subject to the conditions also, or subject to the constraints. Subject to the constraints or subject to the conditions. What does it mean? These are the linear inequations from where we can draw the graphical part and we can find the feasible region, right? Okay, so क्या क्या हो सकता है? Check it carefully. Subject to the constraints क्या क्या हो सकता है? क्वेश्चन तो मेरा अब कर दिया, तो थोड़ा सा याद है, मैक्सिमम कैपेसिटीज दिया गया था क्वेश्चन में, गो डाउन ए और गो डाउन बी का, एज वेल एज शॉप डी, शॉप ई, शॉप एफ. मैक्सिमम कैपेसिटीज आर गिवन, not the minimum capacities, right? So since the maximum capacities are given, so the first inequation will be (60 minus x), right? So 60 minus x is always greater than or equal to 0 because the maximum capacity is given. So 60 minus x is greater than or equal to 0 means we can say x is always less than or equal to 60. From this inequation only we can write, okay, from this expression. So x is always
लेस देन और इक्वल टू 60। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रह सकता है, मैं इसलिए फिर से स्टेटमेंट में जा रहा हूं। गो डाउन ए टू शॉप डी, कितना सप्लाई देता है? x क्विंटल। तो ये ध्यान में रखना है, जब गोडाउन ए का मैक्सिमम कैपेसिटी 100 है तो 100 क्विंटल तो डायरेक्ट शॉप डी में डाल नहीं सकता है। क्यों नहीं? बिकॉज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शॉप डी इज ओनली 60 क्विंटल, सो दैट्स व्हाई x is always less than or equal to 60। 60 और less than 60 हो सकता है x का वैल्यू, not more than 60, because the maximum capacity of D is exactly 60 quintal. Okay? Similarly, y quintal grains are transported from go down A to E, so that means we can say that y is always less than or equal to 50. Why? Because the maximum capacity of shop E is 50 क्विंटल। तो जब गोडाउन ए शॉप ई में सप्लाई देगा 50 से ज्यादा सप्लाई नहीं दे सकता है, इट शुड बी 50 और लेस देन 50। ओके, नेक्स्ट वन। till now we got two inequations, these are inequations only। okay, next one will be 100 minus x plus y is greater than or equal to 0. That means we can say x plus y, it will be what? If 100 it will be shifted to right hand side, so it will be 100, sorry, x plus y must be less than or is equal to 100। yes, जब गोडाउन ए शॉप एफ में सप्लाई देगा it should not be more than 40 quintals, because the maximum capacity of shop F is 40 quintal only। okay, so x plus y should not be less than 100, that is should not be more than 100, it will be either less or equal to 100 हो सकता है। ठीक है, so there are till now we got 3 inequations, one more inequation we got from this one only। okay, जब गोडाउन बी शॉप एफ में सप्लाई देगा, अभी तुम लोग पूछ सकते हो कि व्हाई नॉट, व्हाट अबाउट दिस, ये सब तो ऑलरेडी हो गया। अभी गोडाउन बी जब शॉप एफ में सप्लाई देगा, दैट इज x प्लस वाई लेस देन माइनस 60, दिस कैन बी रिटन एज x प्लस वाई इज लेस देन और इज इक्वल टू 60। x प्लस वाई, सॉरी, दिस विल बी x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 ओनली। ओके, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अभी तुम लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 ही क्यों हुआ? बिकॉज x प्लस, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शॉप F? 40 क्विंटल। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ गोडाउन B? 50 क्विंटल। सो x प्लस वाई का वैल्यू, x प्लस वाई का वैल्यू 60 या 60 से ज्यादा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी less than 60। yes, it should not be less than 60 because it is the summation x plus y। ठीक है, so these are the inequations, inequation number 1, inequation number 2, inequation number 3 and inequation number 4। okay, now you have to solve graphically। बाकी सब क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, यहां तक हो गया मेन पार्ट। अभी क्लास 11 का कॉन्सेप्ट जो ग्राफिकली सॉल्व करके वहां से कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढना है, then we can find easily the minimum value, right? Now I will explain that part only। so now I will discuss the graphical parts, because already we got the subject to the constraints, that is the linear inequation part। so now I will draw the graphical part। first inequation is here, x is less than or equal to 60। now since x is less than or equal to 60, you have to consider it as x equal to 60। so x equal to 60 means clearly we can say that the point will be 60, 0 only। similarly, from the second inequation we can write y is equal to 50, so clearly we can say that this point will be 0, 50। from the third one you have to find the points, because here x plus y is equal to 100 is there, so find out the points। you know how to find, at least 2 points you have to find out। so put x equal to 0, y will be 100, put y equal to 0, x is 100। in the last case also you have to consider it as x plus y is equal to 60। here also you have to put 0, x equal to 0,
when x equal to 0 y is 60, similarly when y equal to 0 x is 60. तो हो गया ये सब कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना. अभी इसको ड्रॉ करना है. Okay, so leave these 2 points first of all. You check these two equations, right? So first one is 0, 100. So 0, 100 कहाँ पे रहेगा? Y axis में रहेगा. So this is say 0, 100 and 100, 0. Next one is 0, 60. So join these 2 points. So after joining the 2 points, write down the equation. So it is x plus y less than or is equal to 100. Next one 0, 60. 0, 60 and 60, 0. Again join these 2 points. So after joining the 2 points, write down an equation that is x plus y. It is I think greater than or equal to 60. Yes, x plus y greater than or equal to 60. Now come to the first point, that is 60, 0. 60, 0, this point only. So x equal to 60 is a straight line which is always parallel to y axis. So x equal to 60 is a straight line which is always parallel to x axis. Sorry, y axis. Y is equal to 50. Y is equal to 50 is a straight line which is parallel to x axis. Y is equal to 60 is a straight line which is parallel to x axis. So 0, 50, it is coming down here only. Because 0, 60 ये होगा तो 0, 50 नीचे आना चाहिए. Okay, so this is 0, 50 and this line is y is equal to 50. So now you have to find the feasible region, right? So for this you need to check diagram थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा. थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लामजी दिखाई दे रहा है. So let us put first this point 60, 0. So 60, 0 is a straight line which is always parallel to y axis. This is x equal to 60. 0, 50 is a straight line which is always parallel to x axis. This is y is equal to 50. This point is 0, 50 and this point is 60, 0. 0, 100 यहाँ पे पकड़ लेता हूँ. 0, 100 and 100, 0 this point suppose. The name of this equation is x plus y less than or equal to 100. Similarly 0, 60 थोड़ा सा ऊपर आएगा. This is 0, 60 suppose and 60, 0 तो यहाँ पे already mention किया गया है. So this is x plus y greater than or equal to 60. Okay, अभी थोड़ा सा ठीक है. This is origin x dash y dash y. This is x. Okay. Now you have to find the feasible region. For this, you have to put x coordinate and y coordinate 0, 0. Okay. So let us put in the third inequation. 0, 0. So 0 plus 0 is 0. 0 less than or equal to 100. Whether it is true or false. In this case, it is true. So since it is true, that means you have to shade towards the origin. So x plus y less than or equal to 100. This is the line. So it will be towards the origin. Okay, similarly x plus y is equal to 60. So in the fourth equation, if you put 0, 0, 0 greater than or equal to 60, which is false.
So since it is false, that means you have to shade away from the origin. So this is the straight line x plus y greater than or equal to 60. You have to shade away from the origin. Okay. Now what about these two straight line? X equal to 60. इसके लिए in equation क्या दिया गया था? X is less than or equal to 60. So if I put here only x coordinate 0, because here y is not there, so that means no need to put y coordinate 0. So if I put x coordinate 0, 0 less than or equal to 60, whether it is true? Yes, 0 less than or equal to 60, it is true. So this is also towards the origin. Similarly, in the second in equation also, if I put y coordinate equal to 0, it is also true. So that means it is also towards the origin. So finally, which is the feasible region? Feasible means the common solution region. The common solution region is this part. Yes, this is the common solution region whose corner points are 1, 2, 3, 4. Total 4 corner points are there, right? So now you have to find the values of those 4 corner points. Out of 4 corner points, we know this value, that is 60, 0. Yes. Now you have to find the remaining 3 corner points. Let us find one by one. First of all, find this one. So this is the point of intersection between which two lines? This is the point of intersection between y equal to 50 and x plus y. Y equal to 50 and x plus y less than equal to 60. Yes. So obviously you have to solve equations, not in equation. So y equal to 50, that means the second equation and fourth one you have to solve. Very simple. Since here y equal to 50 already is given, put y coordinate in this in equation. So if I put here y equal to 50, so this will be 10 only. So if I solve this one, I got 50, 50. Similarly, for this, the third one, how to solve? Check the point of intersection. This is the point of intersection between this straight line, that is x equal to 60, and this one, that is x plus y is equal to 100. So that means abhi first or third ko solve karna hai. So if I put here x coordinate 60, y will be 40. So clearly we can say that now this point of intersection will be 60, 40. Okay. Now we know all 4 corner points. Now let us find the minimum value. सब कुछ हो गया. ये तो अभी सिर्फ conclusion part है. This is corner point. CP means corner point. Z is equal to, what is our objective function? This is our objective function, that is 2.5x plus 1.5y plus 410. Okay. This is our objective function. So let us put the first corner point. The first corner point 10, 50. So if I put here 10, 50, you have to solve. You have to put all these values here only. Next 50, 50. Next 60, 40. And this one is 60, 0. So if I put 10, 50, what will be the value? If I put 10, 50 in this objective function, let us calculate. If it is 10, 50, this will be 510. If I put 50, 50, this is 610. Now if I put 60, 40, let us check. All these values I am putting here only, x and y coordinate के जगह में. 60, 40. If I put 60, 40, this will be 620. And if I put 60, 0, 0 का मतलब यहाँ पे y coordinate 0 हो जाएगा. So 60, 0. This is 660. Okay. So after putting all 4 corner points in the objective function, now you can easily check which one is the minimum value. You are asked to find the minimum cost.
minimum transportation cost, right? So 510 is the minimum value. Yes, so since 510 is the minimum value, so at which point? At x equal to 10 and y is equal to 50. Okay, at x equal to 10 and y equal to 50. So this is the final answer. Now if you want to verify whether your answer is correct or not, you can easily verify. वो जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में लिखा था, क्या लिखा था? x क्विंटल ग्रेन्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम गोडाउन ए टू शॉप डी. x का वैल्यू 10, y 50, x 10 है तो दैट मीन्स गोडाउन बी को ऑब्वियसली 50 क्विंटल सप्लाई देना पड़ेगा शॉप डी को, बिकॉज 10 plus 50 is 60 and the maximum capacity of shop D is 60 only. Similarly, x10 in case of godown E, कितना क्विंटल सप्लाई दिया था गोडाउन ए? y क्विंटल. सो हियर व्हाट द वैल्यू ऑफ y? 50. तो अगर गोडाउन ए शॉप ई को 50 क्विंटल सप्लाई देगा तो गोडाउन बी शॉप ई को कितना क्विंटल सप्लाई देना पड़ेगा? इट विल बी 0 क्विंटल. व्हाई? बिकॉज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शॉप ई इज 50 क्विंटल. तो ऑलरेडी गोडाउन ए सप्लाई दे दिया, तो फिर गोडाउन बी को 0 क्विंटल सप्लाई देने से ही हो जाएगा, बिकॉज 50 से ज्यादा तो वो नहीं ले सकता है. इसीलिए गोडाउन बी से जब ई में सप्लाई दिया, कितना दिया था? 50 minus y. You can check the starting part of the question solution. Godown B to shop E, कितना सप्लाई दिया था? 50 minus y. And here what is the value of y? 50. So 50 minus 50 0 quintal. So in this way you can verify whether your answer is correct or not. Okay. So this answer is correct answer only. Okay. You can verify it also. So this is the minimum value at x equal to 10 and y equal to 50. एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा. जनरली ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, बट देयर इज नो गारंटी. बोर्ड एग्जाम है, आ सकता है. सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल 3 मॉडल्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स: डाइट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन. Apart from these word problems, I have explained the ready-made questions also. Okay, generally ready-made questions मतलब जो objective function and subject to constraints, वो सब काउंसिल में ज्यादा आता है. एक रेडीमेड क्वेश्चन, एक वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, बट सीबीएसई में ज्यादातर ऐसा वर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा आता है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. दिस इज स्कोरिंग चैप्टर. लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है यहाँ से. सीबीएसई में एक शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क का और एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स. 5 + 1 6. काउंसिल में डायरेक्ट 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस very carefully. Okay, so this chapter I have completed today. In the next class I will start a new chapter. So thank you for today.